everyone, welcome to my channel once again. I'm Sangati and I'm back with another topic. So, how are you all doing? I hope all of you are doing so great in your life. So, in the last session, we discussed about how do we respire, right? So today we are going to discuss about how all of these gases, nutrition, waste material, all of these are moving from one part of the body to another part of the body. ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे जाती है एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन विदाउट एनी डिले. So all of these are things like gases, nutrition, waste, salt, hormones. ये कैसे जाते हैं? With the help of circulatory system. So we have a proper circulatory system in our body, which is consisting of heart, blood, and the blood vessels. So these are the three things which are present in our circulatory system. Okay. So let's discuss about this one by one. So let's discuss about blood first. Blood. So you can see that कितना क्यूट सा डायग्राम है ना? कितना क्यूट सा एक ब्लड ड्रॉप का डायग्राम है. सो ब्लड इज बेसिकली इट इज हेल्पिंग टू ट्रांसपोर्ट द gases, nutrition, waste materials, salts, hormones, enzymes, everything. It is also helping in the thermoregulation, means it is helping to maintain the body temperature. Okay, it is helping to fighting against the pathogens and also protect against the injuries. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे होता है. Let's see this. Okay, first let's discuss about the composition of the blood, which is very important. So blood contains the one is the solid part and another is the liquid composition. Okay, so plasma is the liquid component of the blood. Around 50% of the blood volume is blood plasma. Other 45%, rest of the 45% is the RBC. Okay, WBC and platelets. All of these are the solid component of the blood. ठीक है. So let's discuss about the plasma. Plasma is transporting the nutritions. ठीक है, gases जैसे कि CO2, waste, salt, hormone, इन सबको मोस्टली हर एक चीज को कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में होता है वाटर, कुछ प्रोटीन्स, ऑलराइट, सीरम, ये सब होता है प्लाज्मा में. ठीक है. नेक्स्ट इज द आरबीसी. RBC is the red blood cell. Now it is red why? Due to the presence of hemoglobin, which is the red color pigment. ठीक है, it is transporting oxygen in the form of oxyhemoglobin. तो देखो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है oxyhemoglobin. Let's see this. तो let's see this. तो देखो, hemoglobin can bind with four molecules of oxygen and forms oxyhemoglobin. ठीक है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म करता है. Hemoglobin can also bind with some amount of carbon dioxide and it forms carbaminohemoglobin. Okay, please take a note of this, everyone. So it only combines with 20% of the CO2, not all. The rest of the CO2 कैसे जाएगा? Rest of the CO2 is moving through the plasma only. प्लाज्मा से ही ट्रांसपोर्ट होगा. कैसे? इन डिजॉल्व्ड फॉर्म. सो एज यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्यूबल इन वाटर, है ना? इट कैन सॉल्यूबल इन वाटर. सो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. अच्छा, एक और गैस है, हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो, which is a poisonous gas and it forms carboxyhemoglobin. ठीक है, दिस इज अ पॉइजनस गैस. सो पॉइजनस कहाँ पे मिलेगा? ये पॉल्यूटेड एरिया में, मेनली जहाँ पे कंबशन हो रहा है किसी चीज का. ठीक है, जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है वहां पे ये गैस रिलीज होता है. ठीक है. नाउ दिस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन वोंट बी एबल टू कैरी द ऑक्सीजन.
इफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बाइंड हो गया है तो ऑब्वियसली लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है। So this is about the RBCs. Okay. It is mainly transporting oxygen. Next is the WBC. It is the white blood cell. It is helping to like protect our bodies against the pathogens. तो basically ये pathogens को kill करता है. Bacteria है अगर enter हो गया तो it will kill it. Okay. Platelet is another type of cell. It is helping in the clot formation. ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्लेटलेट। ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम देखो जरा, लेट्स सी द डायग्राम। सो दिस इज अ 3D डायग्राम ऑफ आरबीसी। किसका डायग्राम है? आरबीसी है, देख सकते हो आप लोग 3D डायग्राम है, 3D इमेज है ये। तो इसका शेप कैसा है? आरबीसी का जो शेप है इसको बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? बाई कॉनकेव। कॉनकेव शेप है ना, तो बाई कॉनकेव, बाई मतलब दोनों साइड से, डिस्क शेप, डिस्क शेप स्ट्रक्चर। ऑल राइट। तो ये अब ब्लड में ये सारी चीजें हैं, बट इनको सेपरेट कैसे करते हैं हम? हमें कैसे पता चला कि ये सारी चीजें हैं ब्लड में? सिंपली वी कैन डू द centrifugation. Okay, we can use the centrifugation machine, put the blood in a test tube. Okay, put it into the centrifugation machine and it will rotate at a very high rpm. Then every components of the blood will be separated. Okay, it can be segregated. So plasma is lighter, so it will come at the top. ठीक है, सबसे ऊपर आएगा प्लाज्मा, उसके बाद WBC प्लेटलेट्स आ जाएंगे, सबसे नीचे इरिथ्रोसाइट जो कि रेड ब्लड सेल है वो आएंगे। अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी इट विल सेग्रीगेट। ठीक है, नीचे वाले हाई हाई डेंसिटी के, ऊपर वाले लेस डेंसिटी के। ठीक है। So that's how we can segregate all the components of the blood. Now let's see some more information. आरबीसी जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ये बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है। ठीक है। यंग RBCs are nucleated but mature RBCs are enucleated, means they do not have nucleus. Now why they do not have nucleus? Because it has to carry the oxygen, right? तो उसके लिए space चाहिए है ना, ऑक्सीजन जाएगा कहाँ? नहीं तो। So space, in order to create the space for oxygen, it do not contain nucleus. And do you know that it lack mitochondria also? Please take a note of this. Mature RBC lack mitochondria. Why it lacks mitochondria? So in our last session, we have discussed about mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell, right? You know that. So it is producing energy with the help of oxygen. करेक्ट। नाउ अगर आरबीसी का क्या फंक्शन है? आरबीसी का फंक्शन है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना, सॉरी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। करेक्ट। बट अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो अब इसका माइटोकॉन्ड्रिया ये सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाएगा ना। So in order to prevent that, RBC do not have mitochondria. Okay. And RBC do not have nucleus also. Okay. All right. Now, in a healthy human being, the count of RBC is this 5 to 5 point million per millimeter cube. Okay. And there is one more thing about RBC, that what is the lifespan of RBC? 120 days. Please take a note of this. एक आरबीसी कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है? 120 डेज तक। ओके। Next is the WBC. Now WBC do not have any shape. Okay, it is like a amoeba. As you know, amoeba also do not have any shape, right? So WBC also similarly like amoeba, it do not have any shape. So we can also call it as like it has a amoeboid shape. Okay, it is nucleated, इसके पास nucleus होता है. It is fighting against the pathogens. Mainly like it engulfs the pathogens. If कोई अगर bacteria है सामने तो ये क्या करेगा? उस bacteria को engulf कर लेगा. That's how it is killing the pathogens. Okay, in a healthy human being, 0.006 to 0.008 millions per millimeter cube is the good count in a healthy person of WBCs. Okay. Next is the platelets. Platelets are biconvex discoid shape.
ये क्या था, बाई कॉनकेव था, अब ये है बाई कॉन्वेक्स। ओके, इट इज ऑल्सो इन्यूक्लिएटेड, इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। दिस इज हेल्पिंग इन द क्लॉट फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज दिस क्लॉट? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब चोट लगती है, खून थोड़ी देर बाद जम जाता है ना, एक जगह पे रुक जाता है, एंड देयर इज समथिंग लाइक ब्राउन कलर, एक स्ट्रक्चर बन जाता है उस इंजुरी के ऊपर, है ना, दैट इज द क्लॉट। ओके, all right, so platelet is helping in that clot formation. Clot formation is very, very important because it prevents the excess loss of blood. Okay, prevent excess loss of blood. So this is very, very important. All right. Now, एक हेल्दी ह्यूमन में 0.15 टू 0.35 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है प्लेटलेट्स का काउंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो, लेट्स मूव ऑन नाउ टू डिस्कस अबाउट हाउ द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो कैसे करेगा? तो पाइपलाइंस के थ्रू फ्लो करेगा, है ना, जैसे हमारे घरों में पानी कैसे फ्लो करता है, पाइपलाइंस के थ्रू फ्लो करता है ना, तो वैसे ही ब्लड भी कुछ पाइपलाइंस के थ्रू फ्लो करेगा हमारी बॉडी से, एंड दीज पाइपलाइंस आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। As you can see in this diagram, there are so many blood vessels in our body, है ना? कुछ मेन ब्लड वेसल्स होते हैं, कुछ कैपिलरीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट वन बाय वन। आर्टरीज का देखो स्ट्रक्चर, let's see this. It has a thick outer wall and the muscular layer is also very thick. Okay, it has elastic fibers also. Lumen is very small. Lumen is the space. Okay, जो gap है बीच में space है, that is the lumen. Veins के केस में it has thin layer of muscles, large lumen. Okay, outer wall is also very very thick. इसमें ना एक और चीज होती है, कुछ ऐसा टाइप का, ठीक है, बेसिकली these are the valves. क्या बोलेंगे इसको? valves बोलेंगे। valves मतलब देखो, गेट, गेट समझ लो आसान भाषा में, ठीक है, गेट है ये, ठीक, कि गेट, और ये ऐसा दरवाजा है कि एक ही तरफ खुलता है, दूसरी तरफ नहीं खुलता, मतलब एक बार इस दरवाजे से निकल जाओ तो ये बंद। तो अगर ब्लड ऐसे फ्लो करके अंदर चला गया तो ब्लड उल्टा नहीं आ सकता। ठीक है, सो अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैपिलरीज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कैपिलरीज आर वेरी वेरी थिन, इतना थिन कि सिर्फ इसका थिकनेस सिर्फ एक सिंगल सेल का होता है, ठीक है, सिंगल सेल लेयर, एंड लुमेन इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। So let's see this, all of this in a tabular form. Arteries are the blood vessels which are carrying the oxygenated blood, ठीक है, from the heart to the rest of the body. It is carrying the oxygenated blood. So as heart, from the heart it is carrying, so heart is pumping the blood, so the heart the blood pressure is also very very high in the arteries, because heart is pumping the blood, so blood is having a high blood pressure. So in order to sustain that high blood pressure, the arteries are having the thick walls, and the muscles are also very strong. Okay, all right. So it's very similar. देखो हमारे घरों में जैसे पाइप होता है, पाइप से पानी फ्लो करता है। अब पानी का अगर प्रेशर बहुत तेज होगा और पाइप हमने एक सस्ती सी ले ली, पतली सी पाइप ले ली, तो वो पाइप फट नहीं जाएगा। करेक्ट, तो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो हम क्या करते हैं, एक मोटा सा अच्छा क्वालिटी का पाइप लेते हैं, मोटा स्ट्रांग होना चाहिए कि वो उस वाटर के फ्लो को, प्रेशर को सस्टेन कर पाए। तो सिमिलरली, क्योंकि आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसके जो वॉल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, क्यों स्ट्रांग होते हैं? टू प्रिवेंट द बर्स्टिंग एंड मेंटेन द प्रेशर। ओके, नाउ लुमेन इज वेरी वेरी नैरो, सो जो ब्लड प्रेशर है हाई रहता है, एंड इट इज मेंटेन्ड throughout the arteries. Valves are not present. Valves are absent. Why? Because there is no need of the valve, or there is already a very high blood pressure, है ना, which is, there is no chances of the backflow of the blood. So this is the reason valves are also absent. Okay.
Let's discuss about the veins now. Veins are carrying the deoxygenated blood, which is returning from the body to the heart. Okay, so the blood is containing carbon dioxide in it. As it is returning from the body to the heart, so there is no blood pressure or very, very less blood pressure. This is the reason the veins are having a very thin wall. They don't need a very thick wall, correct? Because of the less blood pressure. Okay, the muscles are also like thin. ठीक है, बहुत ज्यादा थिन होते हैं मसल्स, फाइब्रस होते हैं, लूम एंड वाइड होता है. ऑल राइट, स्ट्रॉन्ग वॉल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत कम है. ठीक है, एंड it is having the valves. Valves are present in the veins to prevent the backflow. Because the blood pressure is very low, so there is a chances of the backflow of the blood उल्टी दिशा में भी बह सकता है ना, कि ऐसे जाते जाते फिर से चलो वापस, ऐसे नहीं, राइट? सो टू प्रिवेंट दैट देयर इज द वाल्व्स आर प्रेजेंट, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये रहे वाल्व्स. ठीक है, गेट जैसे. ठीक है, एक तरफ से खुलता है, खुला वर बंद. ओके, नेक्स्ट अप इज द कैपिलरीज. Capillaries are very thin. Okay, only one cell thick है, thickness इसकी one cell है, and due to this the diffusion is very easy through the capillaries. Diffusion of gases, waste, nutritions. Okay, they are very, very narrow, and valves are again absent over here क्योंकि यहाँ पे भी कोई requirement नहीं होती valve की. Okay, तो एक बार हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू, कैसे समझ लेते हैं कि कैसे फ्लो करेगा. सो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज. आर्टरीज आर बेसिकली फर्दर सब डिवाइडेड, डिवाइडेड आर्टरीज के ब्रांचेस होते हैं. दीज आर कॉल्ड एज द आर्टीरियोल्स. आर्टीरियोल्स फिर डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में. तो यहाँ से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन कैरी करके ला रहा है. और कैपिलरीज जहाँ पे है वहां पे क्या है, सेल्स है. ओके, सेल्स एंड टिश्यूज आर प्रेजेंट नियर बाय द कैपिलरीज. And as the capillaries is only one cell thick, so the diffusion, by the process of diffusion, oxygen and nutrition reach the cells, and the waste products and carbon dioxide comes out of the cell and enters the capillaries. Now capillaries are containing the deoxygenated blood which is containing carbon dioxide and the waste products also, है ना, क्योंकि ये आ गए यहाँ पे. तो अब ये कहाँ से जाएगा, अब ये जाएगा यहाँ से. ठीक है, तो यहाँ पे है ब्रांचेस ऑफ द वेन्स. तो वेन्यूल से होते हुए, डिफरेंट वेन्यूल से होते हुए आएंगे, डिफरेंट वेन्यूल्स हर एक डायरेक्शन के वेन्यूल से होते हुए आएंगे, और वेन्स में जाके मतलब सारे वेन्यूल्स इकट्ठे होंगे और वेन्स के थ्रू चले जाएंगे फिर से कहाँ पे, हार्ट में. ठीक है, तो हार्ट से आया, हार्ट में गया ब्लड. So this is the blood vessel. This is how the blood vessels function. All right, students. So I hope it is clear to all of you. Now, in the next session, we will be discussing about how the heart is pumping the blood. Okay, so if you want to see that, if you want to know about that, so please follow our channel, subscribe my channel, and hit the like button if you like this video, and do watch the next video also. All right, so take care. Have a nice day, all of you. Bye bye. See you again.